Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Komal and today I'm going to review and swatches of this Quirky liquid lipstick. But before that, if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe and press the bell icon so that you never miss out my video anymore. And now let's begin. So first of all, I will talk about packaging. So it comes in this type of colorful packaging and the color shade and code name is mentioned over here at the bottom, and the price, manufacturing date and expiry date is mentioned on this side. Price of this lipstick is 449 rupees, but you will always get a discount on purple.com as they have very exciting offer. तो आपको ये आराम से सस्ते दाम में मिल जाएगी. The color that I'm wearing right now is color number 3. I woke up like this. I really love this color क्योंकि आप इसको डेली लगा सकते हो. ऐसा कलर है, न्यूड कलर है. मुझे न्यूड कलर ज़्यादा पसंद है. मेरे पास वैसे तो 5 कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सब के सब, लेकिन उन सब में से मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको आप डेली लगा सकते हो. इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स वेरी क्रीमी एंड बटरी सॉफ्ट एंड गिव्स यू अ मैट फिनिश, बट सम ऑफ दिस गिव्स यू अ सैटिन फिनिश. बट कोई फर्क नहीं पड़ता, सैटिन फिनिश हो या मैट फिनिश हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए and that's all matters. This is how it looks and it has a brand name over here and यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पे इसका कलर कोड नेम लिखा हुआ है and it's transparent so that you can easily pick your color. इसका जो एप्लीकेटर है बहुत ही स्मॉल है, टाइनी सा. ये यहाँ से बैंड किया है उन्होंने ताकि हम इजीली इसको अप्लाई कर सके, वरना जो लिक्विड लिपस्टिक होती है उसमें सीधा होता है तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा लगाना. जैसे कि मैंने बताया कि ये मैट फिनिश देता है तो ऑब्वियसली ये आपके लिप्स पे बहुत ही ड्राई फील करेगा, तो यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर और लिप बाम बिफोर अप्लाइंग दिस लिपस्टिक. एंड मैंने जो ये लिपस्टिक शेड लगाया है उसके ऊपर मैंने लिप ग्लोस लगाया है क्योंकि मुझे बहुत ही ड्राई फील हो रहा था. सो अगर आपको बहुत ही ड्राई लिप्स है, आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस लिपस्टिक. And don't worry, when you apply lip balm on lipstick, it will not come off on your lip balm, so don't worry about it. Pigmentation की बात करें तो I really love the pigmentation. You really need a small amount of this and it gives you a very thick layer in just one stroke. And this is smudge proof, तो आप इसको कितना भी घिस लो, nothing will come off, और long lasting भी है तो आराम से आपके लिप्स पे 8 से 10 घंटे तक स्टे करेगी. You can drink or eat anything you want and don't worry about the lipstick stain. As you can see, there is no stain on this glass. Removing this lipstick is not a big task. You need only oil-based makeup remover. If you don't have any makeup remover, you can use any oil to remove it. And now I will be swatching and showing you all the lip colors on my lips. So that's it for today's video. I really hope you enjoyed it, and if you did, then don't forget to give it a big thumbs up and subscribe to my channel. I will see you soon in my next video. Till then, bye bye, take care.